नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। After Hamdu Sana, my dear brothers and sisters in Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today, my topic is Quran and Ahl Bayt. Topic is Quran and Ahl Bayt. Ahl Bayt means the people of the house of Prophet sallallahu alaihi wasallam, the relatives of Prophet alayhi salatu wasalam. Surah Al-Ahzab, Surah number 33 and verse number 33 too. Allah subhanahu wa ta'ala said, Innama yuridullahu liyudhiba ankum ar-rijsa. Indeed, Allah subhanahu wa ta'ala only intends, wishes to remove all the impurity of sins from you, O people of the house, Ahl Bayt. Allah subhanahu wa ta'ala wants to remove all types of impurity. And the arada yuridu, the only Allah's wishes, this means He did. अल्लाह का जो इरादा होता है, बस वो इरादा ही होता है, वो काम हो जाता है। कुन फयकून, वो जो आप इरादा करता है तो मतलब ये काम हो गया। Then अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा, Allah subhanahu wa ta'ala said, and make you absolutely pure and clean by blessing you with perfect purity and wholesomeness. हमारे लिए हुक्म तो ये है कि गुनाहों से दूर रहें, गंदगी से दूर रहें, इम्प्योरिटी से दूर रहें। लेकिन अहले बैत के लिए फरमाया हमने उनसे गंदगी को दूर कर दिया है। ये फर्क है बेसिकली। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अस एंड अहले बैत। अल्लाह ने हमारे लिए हुक्म और फरमाया है कि हमेशा दूर रहें, बचते रहें गुनाहों से, शैतान से दूर रहें, बचते रहें। लेकिन उनके लिए यह फरमाया है कि ये हमने ऑर्डर कर दिया है और हमने फैसला कर दिया है कि उनके नज़दीक कभी भी कोई इम्प्योरिटी, रिज्स, गंदगी, गुनाह करीब भी नहीं आ सकता। ये अहले बैत और ये कुरान का फैसला है। ये कुरान का फैसला है और अल्लाह का फैसला है। That's why hadith of Muslim, Prophet ﷺ said, Hazrat Zayd bin Arqam radiyallahu ta'ala anhu narrates, Allah's Messenger ﷺ stood up one day in our midst to deliver a sermon. एक वाकया हुआ है और हजरत ज़ैद बिन अरकम बयान कर रहे हैं। Prophet ﷺ stood up in our community and majlis, and Prophet ﷺ delivered a sermon beside a pond called Khum. एक जगह का नाम था जिसका नाम है खुम, between Makkah and Medina. ये दरमियान में जगह है, between Makkah and Medina. Prophet ﷺ praised Allah and extolled him, admonished, directed, guided, and then said, Amma ba'd.
Hamdo Sana. Prophet ﷺ did Hamdo Sana, and after that said, Amma Ba'd. Beware, O people, I am merely a human being. I am Bashar. मैं भी इंसान हूँ. ये खुतबा फरमा रहे हैं आका अलैहिस्सलाम. मैं भी एक इंसान हूँ. The messenger of my Lord, the angel of death, the angel of death, is about to come to me. उसने मेरे पास भी आना है. So I shall respond, I am leaving you with two great things. The first of them is the book of Allah, Quran. First thing is Quran, which contains guidance and light. So you must grasp the book of Allah and adhere to it. He ordained to follow the teachings contained in the book of Allah subhanahu wa ta'ala and motivated to put its teaching into practice. ये ज़ैद बिन अरकम फरमा रहे हैं कि आपने कुरान की फजीलत बयान की कि कुरान को नहीं छोड़ना, वरना फिर सब कुछ गया अगर कुरान को छोड़ दिया. अगली हदीस है कि कुरान को छोड़ दिया गुमराह हो गए. कुरान को नहीं छोड़ना. फर्स्ट थिंग इज कुरान. एंड देन he said, secondly, also the people of my household, अहले बैत. इन दो चीजों को नहीं छोड़ना कभी भी. फर्स्ट इज कुरान, सेकंड इज अहले बैत. Then Prophet ﷺ said, I am reminding you of Allah for the sake of the people of my household, Ahl Bayt. Prophet ﷺ said 3 times same thing. The wording is Uzakkirukumullah fi ahli bayti, Uzakkirukumullah fi ahli bayti, Uzakkirukumullah fi ahli bayti. I am reminding you of Allah for the sake of Ahl Bayt. I am reminding you of Allah for the sake of Ahl Bayt, my relatives, the people of my house. 3 times Prophet ﷺ said. क्योंकि जानते थे कि ऐसे निकम्मे पैदा हो जाएंगे इस उम्मत के अंदर, गद्दार बागी पैदा हो जाएंगे जो मेरी ही अहले बैत के कातिल निकलेंगे. इसलिए बार बार फरमाया था कि उनका साथ ना देना, मेरे अहले बैत का साथ देना. इसलिए ये पहले फरमाया था. नेक्स्ट हदीस from Tirmidhi, according to Zayd bin Arqam radiyallahu ta'ala anhu, Allah's Messenger alayhi salatu wasalam said, Allahu Akbar, I am leaving you with 2 things which are the such that if you adhere to them, you will never go astray after me. Prophet sallallahu alaihi wasallam give a testimony about us. शहादत दे दी कि जो कुरान से अपना ताल्लुक रखेगा वो कभी गुमराह नहीं हो सकता. First thing is Quran, and the first of them is more important than the second. First, the book of Allah, which is rope extended from heaven to the earth, and secondly, my relatives, Ahl Bayt, the people of my household. The 2 will not separate until they reach me at the basin in paradise. Allah. So be watchful how you follow me and act with regard to them both, Quran and Ahl Bayt. Quran and Ahl Bayt. According to Jabir bin Abdullah radiyallahu ta'ala anhu, I heard Allah's Messenger ﷺ say, O people, I am leaving among you things which if you adhere to, you will never go astray. The first one is the book of Allah, and the second one, my relatives, the people of my household. And this hadith from Tirmidhi. And next hadith from Muslim, Prophet ﷺ. And this hadith, according to Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha, हजरत आयशा सदीका रदी अल्लाह ताला अन्हा वो बयान कर रही हैं और शान बयान हो रही है अहले बैत की. हजरत आयशा सदीका भी उनकी शान बयान कर रही हैं.
और इन तारीख वालों ने उनके दरमियान जंगें करवा दी। नाउज़ बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। दुश्मन कभी दूसरे की तारीफ नहीं करता, दुश्मन की तारीफ नहीं करता। भाई जिसको आप अच्छे समझते ही नहीं उसकी तारीफ करोगे? भाई उसका तो जिक्र सुनना भी आप पसंद नहीं करते। हमेशा तारीफ उसी की होती है जिसको बंदा लाइक करता है। हजरत आयशा सदीका रदियल्लाहु ताला अन्हा, she narrates, the Prophet ﷺ went outside in the early morning and he was wearing a black embroidered for wrapper, chadar, special shawl. Then along came Hassan bin Ali radiallahu anhu, so he tucked him inside the wrapper. Then along came Hussein radiallahu anhu, so he got inside with him. Then along came Fatima radiallahu ta'ala anha, salamullah alayha, so he tucked her inside. Then along came Ali radiallahu ta'ala anhu. And so Prophet ﷺ tucked him inside. Then he said, Allah seeks only to remove uncleanliness from you, O members of household, O my Ahl Bayt. Prophet ﷺ said, Allah subhanahu wa ta'ala revealed this verse about you. Innama yuridullahu liyuzhiba ankum ar-rijsa ahlal bayti wa yutahhirakum tathira. Prophet ﷺ said, Allah subhanahu wa ta'ala revealed this verse only for you. And to cleanse you with the through cleansing. This hadith from Muslim. And the same hadith according to Umar bin Abi Salma, and he was brought up by the Prophet ﷺ, stepson of Prophet ﷺ, Umar bin Abi Salma. When this Quranic verse was revealed to the Prophet ﷺ in the home of the mother of the believers, Salma radiyallahu ta'ala anha, Allah seeks only to remove uncleanness from you, O members of household, and to cleanse you with the through cleansing. Innama yuridu, same ayah. Prophet ﷺ summoned Fatima, Hassan and Hussein. Then he enveloped them with a metal. Ali radiallahu anhu was behind his back. So Prophet ﷺ enveloped him also with the same mantle. Then he said, O Allah, these are the members of my household. So remove uncleanness from them and cleanse them with the thorough cleansing. Salma radiallahu ta'ala anha said, I am also with them, O Prophet Allah, O Prophet of Allah. Prophet ﷺ said, you are worthy of your place and you are at the better station. And this hadith from Tirmizi. आप पूछती मैं भी अंदर आ जाऊं उस चादर के अंदर, आपने फरमाया नहीं तो उधर ही रहे, यही बेहतर है मकाम आपके लिए। लेकिन स्पेशल पर्सन जो थे वो अपनी चादर के अंदर लपेट ली। These are the Ahl Bayt. May Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq to understand Quran and Ahl Bayt. وما علي إلا البلاغ.